We are going through liquidity analysis of a business organization through financial statements. We have talked about liquidity and its importance that liquidity is something which is a key to the operations of a business. Now we'll have a look at various ratios or measures of measuring liquidity of a business organization. हमारे पास कुछ रेशोज हैं जो कि आम तौर पर लिक्विडिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं. Then we also have got some absolute measures which are used to see the liquidity of an organization. These are current ratio, quick ratio, cash ratio, gross working capital, net working capital, cash conversion cycle, and trade or operating cycle. Now, one by one, we'll have a look at all these ratios. The first one is current ratio. हमने ये डिस्कस किया था कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ वो एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं जिनकी यूजफुल लाइफ या जिनकी नॉर्मल लाइफ 1 साल से कम होती है. सो the assets which are converted generally in cash in 1 year are current assets, and the liabilities which are payable within 1 year are current liabilities. So a ratio where we divide the amount of current assets with the current liabilities is actually a current ratio. Quick ratio is a ratio which gives us more, you can say, pinpointed or focused liquidity. यानी करंट एसेट्स में कुछ ऐसे एसेट्स भी शामिल होते हैं कि जिनको कैश में कन्वर्ट करने में कुछ टाइम लगता है. सो व्हाट वी डू इज दैट वी कैलकुलेट अ क्विक रेशो where we remove those current assets which require relatively longer period of conversion into cash, and these assets are called quick assets. So a ratio in which we divide quick assets with the current liabilities is called a quick ratio. This is also termed as acid test ratio. Acid test is a test which is done in laboratories where very quickly we convert something into another form and we can see the results. So that is why that is termed as quick ratio. Quick assets are, the formula is current assets less the inventories and prepayments. Then we have cash ratio, in which we consider the cash and cash equivalents. Cash equivalents वो चीज़ें हैं जो कि अगर स्टे करेंसी या कैश तो नहीं होते लेकिन उनके जैसे ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ देर आर सम ट्रेवलर चेक्स और प्राइस बॉन्ड्स which are readily convertible into cash without any change in their value, so we call them some cash equivalents. So when we divide the cash and cash equivalents, we get a cash ratio with the current liabilities. ये हमें immediate liquidity की position ये रेशो हमें बताती है. फिर liquidity को देखने के लिए हमारे पास overall current assets भी हैं. I mean, the total value of the current assets shows the liquidity position of a company. More is the value of the current assets, better is the liquidity of the company. So with reference to current assets, we use the term gross working capital. So gross working capital is nothing but the total value of all the current assets. And the current assets are commonly cash and receivables and inventory and prepayments. Then this working capital is further narrowed down to what is called the net working capital. In gross working capital, we have all the liquidity that is there in the form of current assets, but then there are current liabilities, meaning that out of these current assets, we have to pay something to the others. यानी ये जितने current assets हमारे पास हैं, इसमें से एक अमाउंट है जो हमें और लोगों को भी देनी है 1 साल के अंदर. So if we want to see the net effect of it, that whether our liquidity position by comparing the two current assets and current liabilities is good or not,
वी कैलकुलेट द नेट वर्किंग कैपिटल, यानी हम करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं. एंड इफ वी गेट अ फेवरेबल और पॉजिटिव पोजिशन, दैट मीन्स दैट आवर लिक्विडिटी इज good. Then there is another very interesting measure of liquidity, which is called the cash conversion cycle. We'll talk about this also in detail in the later modules, but at the moment, cash conversion cycle is that when we actually hold our inventory or sell the goods on credit. जब हम क्रेडिट पर अपनी चीज़ों को, सर्विसेज को, प्रोडक्ट्स को बेचते हैं, तो हमारे पास अकाउंट्स रिसीवेबल अराइज होते हैं जिनसे हमने पैसा लेना है. तो हमारा पैसा कुछ अरसे के लिए ब्लॉक होता है. सिमिलरली व्हेन वी बाय इन्वेंट्री और स्टॉक, वी एक्चुअली ब्लॉक आवर मनी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब तक वो इन्वेंट्री बिक नहीं जाती, कैश में कन्वर्ट नहीं होती. सिमिलरली व्हेन वी बाय समथिंग फ्रॉम आवर क्रेडिटर्स, तो उनका पैसा हम अपने पास कुछ अरसे के लिए ब्लॉक करते हैं. So cash conversion cycle is a ratio, is a measure basically in which we actually see that in how many days we actually realize cash from the operations. And finally we have got operating cycle or trade cycle. यानी जो बिजनेस में हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं इन अकाउंट्स रिसीवेबल्स, या जिन्हें डेटर्स भी कहा जाता है, एंड द इन्वेंट्री, वो पैसा हमारे पास कितने दिनों के बाद वापस आएगा. एंड दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ऑपरेटिंग साइकिल. इन अदर वर्ड्स, वी कैन से दैट फॉर हाउ मेनी डेज the amount or the finances are blocked in our receivables and our inventory. The basic rule or principle is that we should have a quick cash cycle, cash conversion cycle. We should have a shorter operating or trade cycle. जितना ये ट्रेड साइकिल या कैश कन्वर्जन साइकिल छोटा होगा, क्विक होगा, उतनी ही जल्दी हम अपने बिजनेस से अपना पैसा रिकवर करेंगे, जिसे हम बिजनेस में और ऑपरेशंस में री इन्वेस्ट करके मजीद प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं.